Now in the P block elements, we will study action with ammonia. So action with ammonia we will study. So this is diborane plus ammonia. Excess of ammonia at low temperature at minus 120 degrees Celsius will give us B2H6 to NH3, or in ionic form it will exist as NH3 whole twice BH2 positive BH4 negative. And this complex, when you heat it, it will give you borazine, that is 2B3N3H6. Then another reaction, B2H6, when it is treated with excess of ammonia at a very high temperature, it gives Bn whole X, that is it gives you boron nitride, which is a polymeric compound. We will see its structure. Third reaction is, when diborane it is treated with ammonia at 180 degrees Celsius in 1:2 ratio, it will give us borazine and hydrogen. Now structure of boron nitride. This is the structure of boron nitride. It is a polymeric structure, इस तरह का BnX whole X. So B double bond N, B double bond N, B double bond N. And you can see in ionic form positive charge exists on nitrogen and negative charge it lies on this boron. So boron nitride is a giant molecule and it resembles graphite. जो कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, उसको रिजेंबल करता है ये अपने स्ट्रक्चर में, जो बोरॉन नाइट्राइड है. And boron and nitrogen are at alternate positions, giving us Bn bonds. Boron atom bonded with nitrogen has 8 valence electrons. जो बोरॉन एटम होता है जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम बोरॉन एंड 5 आर फ्रॉम नाइट्रोजन. 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर ऑफ बोरॉन. नाउ द पाई बॉन्ड बनता है इसमें Bn. अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, उसमें देखा होगा डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है. जो तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय व्हेन नाइट्रोजन विच हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करती है 2p ऑर्बिटल, जो बोरॉन का 2p ऑर्बिटल है उसको करती है. तो जो बोरॉन की जो वैलेंसी होती है, जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज 5. 1s2 2s2 2p1. तो इट हैज px और इसके दो ऑर्बिटल्स हैं दे आर वेकेंट. इसके 2 2p और इसमें वेकेंट 2p ऑर्बिटल्स हैं. these vacant orbitals they are given electron by nitrogen. Therefore तभी आपने देखा है कि बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड नाइट्रोजन हैज positive charge. And Bn length in boron nitride is 1.45 angstroms. Now next is action with amine. How diborane it reacts with amines. Now B2H6 it attacks with, this is a secondary amine, dimethylamine. Secondary amine है ये, at minus 42 degrees Celsius. So what will it will give you? BH3, this ionic nitrogen will donate again nitrogen here from this this is secondary amine. nitrogen जो है that will donate electrons to this. addition product बनेगा, पर जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर रही है बोरॉन को. तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और बी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. एंड it gives product, this is the ionic form, or otherwise it gives product like this, CH3 whole twice and BH2. Then another diborane, when it reacts with trimethylamine, again it will form product like this. Nitrogen is donating electrons to boron. This is the ionic form. This will form complex in which nitrogen is donating electron to boron. Then action with ethers and thioethers. So B2H6 it reacts with, this is dimethyl ether. So it will again oxygen here, it is donating electrons to boron. And when it reacts with diethyl thioether, then also sulfur उसमें है,
बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, सल्फर के पास भी लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं रादर दोनों के पास. तो बोथ ऑफ देम दे विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन लाइक दिस. देन next we have how it reacts with pyridine. Again on reaction with pyridine, nitrogen है, nitrogen is again having lone pair of electrons, boron it is having vacant orbitals, so nitrogen also here complex is formed, so nitrogen will donate its electrons to boron. And here action with alcohols, B2H6 with methyl alcohol, it will form BHOCH3 whole twice and hydrogen is given. Similarly, diborane, it reacts. This is the ratio. The reaction depends upon the ratio. Here we have used more 1:6 ratio. Excess of methyl alcohol is used. So we get B and OCH3 whole thrice. All the hydrogens, they are replaced by CH3O group and 6 hydrogens. Then action with trimethyl aluminium. So when it reacts with trimethyl aluminium, we get trimethyl boron plus AlBH4 whole thrice. Then addition to alkenes. This is hydroboration reaction. So what will happen here? This is a alkene. Alkene, when it is treated with diborane, so the hydroboration will occur. So boron here it will get attached to alkene B group. This is RCH CH2 whole thrice B, and then further when you treat it with this C2H5COOH in anhydrous form, we will get alkane R, simple alkane RCH2CH3. Then if you treat it with, this happens when you, this is propanoic acid C2H5COOH, if you treat it with propanoic acid. Now if you treat it with H2O2 in the presence of OH hydroxide, hydrogen peroxide or base की presence में, then we get alcohol RCH2CH2OH and boric acid. So this is all about the reactions of diborane. Thank you.